Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, evening, afternoon, wherever you are. Hope you're doing well. Hope you're staying safe and staying healthy. And welcome to this particular session, jahan par I am really looking forward to talking to, of course, our very own and very favorite Rohit Dev, Colonel Rohit Dev, but also someone who has been vocal about a lot of issues related to POK, to India, to Pakistan, to other global issues. Someone who is right now in exile, but still very vocal about things happening around us. So, without wasting any more time tonight, I really want to get both the guests so that we could have a great session. A very मीनिंगफुल सेशन प्लस अगर आप लोग भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या आप कनेक्ट होना चाहेंगे you will definitely get an opportunity to connect with both Dr. Amjad Ayub Mirza ji and our Colonel RDX. So let me just get them both on the screen. Hello, Colonel. Hello, Dr. Amjad. Jai. Jai Hind, Namaskar, Hari Om. Jai Hind. For the very first time, I have the privilege of having Dr. Amjad Ayub Mirza ji. इनको हमने सुना है, देखा है बहुत सारे अपने सेशंस में, प्लस जो ये खुद करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, प्लस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां पर जाके ये ही इज वेरी वोकल. So thank you for giving us time, Dr. Amjad, and welcome to this platform for the very first time. Thanks for having me. Thank you. Our pleasure. And Colonel and I have been doing this for a while. He has taken. मैं यही बोलूँगा इसको simple words में अगर बोले, he is actually helping us a lot in the enlightenment of our diaspora. I am sitting in US, he's sitting in India, and you are sitting wherever you are. Different जगह से बैठ के different जगहों पे रह के भी we are trying to connect the people to the right issues, right topics, and sending across the right message. So we are always grateful to Colonel RDX as well. आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो टॉपिक है, it has been on top of everybody's mind, and this is how I normally start my show, where I ask, what is that one thing on top of your mind. So let's start with you, Dr. Amjad. अगर आपसे पूछूं मैं कि what is that one thing which is on top of your mind right now, क्या होगी वो चीज? The one thing that is on top of my mind now is a woman from POJK by the name of Maria Tahir, who was gang raped for 7 months, and she was kept in her corpus, and also her son was kidnapped for ransom. She has been denied justice. The people who raped her or gang raped her were high officials of the government of Pakistani occupied Jammu Kashmir, and she has been denied justice for the past 7 years, and now her life is in threat. So that is at the moment on my mind, because we are going to start a Twitter campaign, #Justice for Maria Tahir. So that is something that is on my mind because it concerns my people. And to add to that, we'd love to know more, and I will also do a little bit of research, Dr. Amjad, और देखते हैं कि अगर हम भी किसी तरह कर सके, we'll definitely do that. And Colonel, to you, again, what's I know a lot of things have been on top of your mind, which your Twitter speaks a lot. I think Twitter is the gateway to your mind. और बहुत कुछ हमने देखा in the last few weeks. But if I have to ask you the same question, what's that one thing? I just went into the Twitter before coming here, and that one thing which struck me was the simplicity of how the Israeli diplomats and their people, take up with a lot of heart and courage when they have these terror strikes. And, I'm quite sure Israel will strike back wherever it matters. And that's one country which always is so somber in pain and so brutal in action. I think that's a good messaging which that country is carrying forward. So that's one thing which came to my mind just before the show. Otherwise, you are right. There are many things on my mind. And one thing for the last 1 month always comes back to me is how the Russians, it's typical to Boris Yeltsin,
and the era before that, how their leaders kept the glasnost so close to the chest, and before it happened, the perestroika movement. And similar to that same country, how the KGB official, now the president, kept it so close to his heart, and he was waiting for an opportunity. So I think the angst, in Putin is showing, and and in whatever fashion it is showing on the other side, the coherence of the United Nations, the NATO, is being called out as well. So I think geopolitically, it's a very, very difficult time in terms of perception today, not otherwise. And that is where I find my country doing what's best in our interest. So I think that is one thing which is always beckoning me in the last few weeks now, that how India is able to wade through this period without making choices, or more specifically the wrong choices in the way to go forward. So that's on my mind generally most of the time. Got it. So, since we want to time box this session tonight, let me jump right into this topic. ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ है इस टाइम पे, इमरान खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को या पार्लियामेंट में जाके जो डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को, उसके बाद ही इज ट्राइंग टू पुट अ लॉट ऑफ फिंगर्स एट यूएस के यूएस से मिलकर उसके खुद के कंट्री के लोग या पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू sabotage everything. लेट्स डॉक्टर अमजद, आपसे शुरू करते हैं. इस पूरे सिनारियो को अगर आपको समराइज करना है और एक ऐसे इंसान को समझाना है जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, कैसे समझाएंगे क्या हुआ ये पाकिस्तान के अंदर अभी? देखिए, पाकिस्तान में ये हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पिछले 10 सालों से एक डेट डिपेंडेंट इकोनॉमी में तब्दील हो चुकी. इससे पहले भी डेट था पाकिस्तान का, लेकिन वो टोटली डेट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं थी. उसकी कुछ एक्सपोर्ट्स थी, कुछ उसका इंटरनेशनल बिजनेसेस थे, तो उसको हम टोटली डेट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं कह सकते. लेकिन पिछले 10 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी डेट डिपेंडेंट इकोनॉमी बन चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि आप को गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाहें देने के लिए, मिलिट्री की तनख्वाहें देने के लिए, और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं डे टू डे, उनको जारी रखने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है. और उसमें जो है सर्विसिंग भी आ जाती है, यानी जो आपने पुराने डेट्स का इंटरेस्ट देना होता है वो भी आप मजीद कर्जा लेते हैं. यू try to get more loans, term loans, long term loans, and once that phase is over, then you start selling your national assets. तो इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो कर्जा चाइना से लेने के लिए सिंध के जो आइलैंड्स हैं वो चाइना को बेचे. सी पैक के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडियन टेरिटरी है, लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो उसने चाइना को दी. तो इस तरीके से जो है मोटरवे जो बना रहे हैं वो उन्होंने ठेके पे दी हुई है. गवादर की पोर्ट चाइना को दे दी है. तो ये इस तरीके से ये क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसमें जो रूलिंग एलीट है उसके मुख्तलिफ सेक्शंस के दरमियान जो है वो एक टसल शुरू हो गई. और वो टसल हमने देखा कि उसका क्लाइमैक्स उस वक्त हुआ जब प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ, उनको हटाया गया और उनको हटा के इलेक्शन करवाए गए, और उसमें जो है वो लाया गया इमरान खान को सामने. अब इसमें इमरान खान जो है, जो शहबाज अपना नवाज शरीफ है, वो रिप्रेजेंट करता है सिविल सुप्रीमेसी को, बेशक सिंबॉलिकली ही सही. और वो ये है कि जो सी पैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रोड बिल्डिंग है, रेलवे है और इंडस्ट्री है, ये सारी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पार्लियामेंट लेगी और सिविल गवर्नमेंट के को मिलेंगे वो, या आर्मी जो है वो कहती है कि नहीं, ये हमारी जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है इसको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और आर्मी जो है वो ये कंस्ट्रक्शन करेगी सारी.
ये टसल थी जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ को एक झूठे मुकदमे में फंसा के तो उसको डिस्क्वालीफाई करके प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, इलेक्शन किए गए, और फिर डायरेक्टर जनरल उस वक्त के जो आईएसआई के थे फैज अमीर, उन्होंने एक पूरा इंजीनियर किया एक सिनेरियो जिसमें इमरान खान को लेके आए। लेकिन इमरान खान ने आके पाकिस्तान को मजीद इकोनॉमिक क्राइसिस में, मतलब है उसके दौर में और डीप हो गया। उसमें फिर जाहिर है कि आर्मी के अंदर भी एक टसल शुरू हो जो थी वो बढ़ गई, और उसमें फिर अपोजिशन की सारी जमातें वो इकट्ठी हो गई। उन्होंने एक इमरान खान के को निकालने के लिए एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट की, जलसे किए, और उसमें उन्होंने फौज को बहुत लताड़ा और कहा कि फौज जो है इसको अपना पॉलिटिक्स में जो रोल है इससे पीछे जाना चाहिए, निकलना चाहिए, और इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हम खुद इमरान खान को जो है डील कर लेंगे। इस सारे सिनेरियो में फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा कराया गया नेशनल असेंबली में, और उसके लास्ट डेट जो थी कि उस डेट तक उनको वो सेशन बुलाना था, एक सेशन बुलाया गया, और उस सेशन में एक ऐसा लेटर के बहाने से जो लॉ मिनिस्टर हैं वो खड़े हुए, उन्होंने एक पर्ची निकाली और पढ़ी, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो कहा है कि उनको एक लेटर आया है अमेरिका से जिसमें उनको कहा गया है कि इमरान खान जो है इसको हटाया जाए, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर इमरान खान हार जाता है, यानी कि वो नहीं रहता प्राइम मिनिस्टर, तो सब ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो पाकिस्तान के लिए इसके बड़े खतरनाक नतीजे सामने आएंगे। अपोजिशन ने इस खत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये खत जो है फॉरेन ऑफिस में शाह महमूद कुरैशी ने इंजीनियर किया है, खुद लिखा है, पेपर किया है, और ये खत था ही नहीं, ये तो एक रूटीन की केबल है जो हर एम्बेसडर जो है भेजता है अपने प्रधानमंत्री को। तो इस बेसिस पे डिप्टी स्पीकर असेंबली ने वो मोशन जो है उसको बाहर फेंक दिया, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है उसको नलीफाई करके पार्लियामेंट का जो सेशन था उसको पोस्टपोन किया। उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मैंने प्रेसिडेंट को एडवाइस भेज दी है कि नेशनल असेंबली तोड़ दे। प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली तोड़ दी। उसके उसी दिन, इतवार का दिन था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर जाके उन्होंने मीटिंग की एक्सक्यूज मी, और डिसाइड किया कि हम सुओ मोटो एक्शन लेंगे। सुओ मोटो एक्शन जो है वो लिया गया, और फिर 5 दिन मुकदमा चलता रहा, और उसमें साफ जाहिर था कि इमरान खान के बिहाफ पे जो डिप्टी स्पीकर ने किया है, अपना रूलिंग दी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जाहिर है इसमें वो इशारे का इंतजार कर रहे थे, कल वो इशारा आ गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, और उन्होंने फैसला सुना के जो है वो उसको जो जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे के असम्बलियां बहाल कर दी हैं। और अब 9 तारीख को सैटरडे को, यानी कल सुबह 10:30 बजे नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया है ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो उस पर वोटिंग कराई। जी थैंक यू। इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड इवन फॉर मी कुछ चीजें थी जो मुझे भी शायद नहीं पता थी, तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। और कल तो जो होगा सो होगा, वो तो ऑब्वियसली कल सारी दुनिया उस चीज पे नजर गड़ाए बैठी होंगी। बट ये जो हुआ है, एंड आई विल गो बैक टू कर्नल। कर्नल, जिस तरह से ये हुआ है, हाउ डू यू सी इट फ्रॉम जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव जो हो रहा है, और उसके बाद हम बाकियों की भी बात करेंगे कि इसमें कितना आपको लगता है यूएस का या किसी और कंट्री का रोल हो सकता है। बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I think what doctor has brought out is very clear. It is more to do with the economic decline. It's sort of an abyss in which Pakistan has landed itself and is deepening to go down and down. And that's been a bane. So, what has happened typically is that all the money which was flowing, yes, it was loan, it was lent, and it came from a lot of quarters, and especially two major quarters. One was the United States of America, which had waged the Cold War, Russians, Afghanistan, that scenario. And from then, a lot of money used to flow in. Unfortunately, it used to flow in through a lot of segments like World Bank and USAID and others as well.
on behalf of the government of US, and it was made for development projects and everything else. However, we all know where the money went. The money went into the wrong quarters, wrong hands, used to create a lot of unrest and genocide in parts of Pakistani occupied area, and also to furnish terrorism across the border. The second zone, which from where they got a lot of money, was the Middle East, and the typical call for the Islamic Caliphate and the Pakistani dream to take it ahead had a lot of money flowing in and a lot of connects being made. And with this money, they did a lot of things, as per their interest very well. So apart from using it to mold it against India or their enemies otherwise, they use a lot of money through propaganda by buying out people, like I keep saying, in the international fora, with the journalists, with the print media, with the diplomats, whether people of stature, whether celebrities. They did it all. They did all right from in New York till wherever they could go to sow the seeds against their adversary, and especially India. And that is where I think they wasted a lot of that money, and they landed up in a situation that when India's diplomacy became more and more aggressive and started beginning to call out, and the world realized, and I keep saying, and I agree with Dr. There as well, to say that when he says it's economics, India also saw that it has a lot of opportunity tomorrow to emerge as a lead world market. And that is where India has been able to push the pedal diplomatically and try and get things in its favor. And one of the things India did very subtle manner, but in a very surer manner, it was visible on most fronts if people picked it up correctly, was go to the same countries and same sources, including OIC and everything else here and there, to curtail and curb the money flowing into Pakistan. That was our aim one. And it is conjoined with the philosophy that right from 1971, when Brigadier Malik and Ziaul Haq curated that the Quranic concept of war, and they plunged in a lot of money and resources into putting it into effect. India for a long time waited how to counter that, and unfortunately, and I will say it with no, without mincing any words, in the propaganda machinery and the in the case of buying out people across the world, there were many sellouts in India who were also very keen to get bought at by that kind of propaganda, and that had weakened our actual fight against terror. It was not that support lacking from any of the country. We didn't need any support, but it was that lack of conviction to hit hard. And since the last few years, both have emerged: the conviction to hit hard, and also the ability to block the financial flow of free money and freebies into Pakistan. And Pakistan, as a state, like the doctor also brought out, has now lent itself to become a sort of a country on sale, and everybody else, because primarily the class of people who controlled Pakistan politically, and half of them were stooges of the military that time. And when you see the generalship and leadership of the Pakistan army per se, not the other services, you'll come to know from which regions of Pakistan they are from and how they control major businesses in that country. They all turned to be very, very selfish, and they never saw Pakistan emerging as a very great self-reliant nation. They never had that dream. Probably they probably even didn't talk about it much, because their entire focus was Kashmir, 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 and they forgot that they had their own country to look after actually. And that is the way they have denuded their defenses, which other countries and countries like India have been able to penetrate and demolish the myth of their jihad, the myth of their Islamic Caliphate, the myth of their being a part of a war against a superpower earlier. And post Afghanistan is where their destiny changed, and Mr. Imran Khan's destiny also changed, because in that exuberance and fervor of the pullout of the Americans, and before that pullout, the Americans were very, very cognizant of the fact that Pakistan may not be playing ball beyond a particular point, and that is why right from the Secretary of State traveling to Russia, from Russia to India, to India to Pakistan, and many rounds, and France and Germany trying to also talk some sense here and there. It all happened. But somehow Pakistan thought, I have a new, check in cashier in China. I have a new friend to create some turmoil in Turkey. And they got into some kind of a mindset that we will control the future of Afghanistan. And they got so, be minded,
that they didn't even see the humanitarian assistance of India as something which they could accept. And you saw what happened after the fall of Afghanistan. You saw how the mercenary action began. You saw how arms and ammunition, which were looted from whatever the caches of the Americans left, they traveled into Pakistan and they thought they will use it against India. But unfortunately, the Durand line is the Durand line, and all across the Durand line, both sides, there were skirmishes and they had setbacks and they had firefights. So I think the Pakistani judgment did not assess it well. And coming to this here, all their plans to create that kind of a momentum for infiltration, India is all going down. So they lost economically, they lost the Kashmir bogey, they lost on many fronts of funding. They actually have become a state in which, I don't think so if they have even time for introspection, because the speed of the downfall is so fast. I don't think so any governance there will be able to do anything worthwhile, at least in the next couple of years, because the onslaught of actions against them, the FATF, they're just barely managing not to be blacklisted by a couple of votes here and there, Malaysia and other countries. I think that surely, but in some time will go away as well. So I think Pakistan has reached a stage, and I personally talk about Pakistan, when people ask me about Pakistan, but Pakistan is a country I think we should have forgotten as a country, being India a long time back, and all these players in the committee world over, in various media houses, professionals, and geopolitical analysts who talk about a stable Pakistan is good for stable India. I think it's all bumkum, right? So the existence of Pakistan itself is a problem for India. Has been a bane for a long time, and it's a country which does not know what's good for its own people. I think there has to be an internal revolution in Pakistan, and it's not hinging around Kashmir. It's a revolution which the people of Pakistan, they need to be made more and more aware and educated. And as that awareness, gains momentum, I think they will ask the questions of the people, of their leaders, of their military, and that is when a real change in Pakistan will be driven. I don't think so it is going to be driven by any kind of Indian action or otherwise. Yes, if they're foolish enough to do anything, I think India is in a place that we are now very full of conviction and will to act. And the world has taken note of what we've been talking for at least the last 6 years. They didn't gather much sense that time, and it was India's war, India's war. But I think today we have many friends, and many friends are contributing. There can be a name of at least 30 countries today on this earth who typically support India in its war against terrorism, and they have been able to nip Pakistan and cut its wings as well globally. So I think that is where Pakistan is. And coming to tomorrow, a Saturday, I actually was looking forward to a nice Michelin star dinner tomorrow. Somebody's come from somewhere and organized it, but I don't know. This news will follow in the morning. But the good part is the Navratras are, the Ashtami is tomorrow. People are going to make nice puris and halwas and chanas and kulchas, and that's going to be the fervor in India. I don't know what kind of drums will those Pakistanis play, in pain or in whatever gains they have, but they're not going to be a comfortable country to live in. If you're a citizen of Pakistan, it's not going to be a comfortable country if you're a leader in Pakistan, and certainly not going to be a country which was same as yesteryears for even the military of Pakistan. So that's the conundrum they are in. Nobody's too sure that who's going to have the upper hand. And while there are talks that the military wants some kind of a disconnect to come back to, take on some mantle of power and usurp some power, I don't think it's going to happen so easily as well. While Nawaz Sharif wants to come back for Eid, I'm not too sure if he comes back, he's falling into a trap or otherwise. So that's a country for you. It's in shambles. It's in a pitiable state. But having said that, I think it owes a lot of explanation to its own people, and it owes a lot of lives lost in that country. Illegal occupied territories which Pakistan has, it must let it go. And I think time has come for the right noise to be made. And I was so pained by hearing the first slot by the doctor when he said and talked about that lady's case. I mean, imagine a country like that, and you're trying to just butcher people and kill people's, hearts and souls by your actions. So cruel. And I think you don't deserve no mercy. And so I have no mercy for this Pakistani establishment. And I think they will meet their fate one day or the other, and these uprisings will come up the way they're supposed to come, because no human, it's about survival, right? Today you got the gun on his nose, he may not talk, but time will come that he will snatch the gun and fire at you. So it's happening already there. And I think that's the seed of discontent, which is talking by the gun. But when the talk actually comes from the mind and the educated and aware people, I think that's the time Pakistan can change. But I am saying again, I don't want a stable Pakistan. It's better gone down. Absolutely, nobody I think wants it. And Dr. Amjad, what Colonel said, इसके basis पे आप कुछ add करना चाहेंगे? Because
I think you are also as close as Colonel to all the things happening in Pakistan. Obviously, कल की चलो बाद में बात करेंगे, but overall अगर देखी जाए, the economics, the overall dynamics of this country is completely in shambles. कहीं से भी देखें, बहुत सारी मीम्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, किस तरह से वो कटोरा खान उनको बुलाया जाता है एंड व्हाट नॉट, राइट? कि इतना ज़्यादा डेट के अंदर घुसे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी अ, एक वो क्या कहें, इफ आई डोंट नो इफ द अक्कड़ इज़ द राइट वर्ड और नॉट, वो एक घमंड जो है, वो फिर भी दिखाने के लिए दुनिया के सामने अलग ही तरह का एक एक फेस है। और वो फेस आज कोई भी देखना नहीं चाहता, कोई भी कंट्री नहीं देखना चाहती। बट आई वुड लव टू हियर योर व्यूज एज वेल, और उसके बाद मैं निपुन को ऐड करूंगा। निपुन आल्सो वांटेड टू काइंड ऑफ चैट विद बोथ एंड ऑफ कोर्स ब्रिंग अप सम क्वेश्चंस। सो पहले आपसे सुनेंगे डॉक्टर अमजद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? First of all, allow me to say this, that it is seldom that in your life, when you go out on a campaign or you enter into politics, that you find someone who presents an analysis with which you can agree fully, 100%. And I think Colonel Saab has mentioned two scenarios with which I not only agree 100%, but I also campaign for those two. Firstly, he mentioned that we do not want to see a stable Pakistan. I mean, I cannot explain how pleasant, how reassuring, and how happy I feel when he says that, because हर इंडियन चैनल पे लोग आके कह रहे हैं हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहते हैं, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि ये कैसे लोग हैं जो अपने दुश्मन को मजबूत देखना चाहते हैं, who want to see their enemy strengthened, strong and stable, instead of destabilizing your enemy, smashing your enemy into the ground, and once and for all remove this 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 antagonist from our region. Now, the second thing Colonel Saab has said is that a revolution, he's referred towards the people's revolution. I've always been saying that unless there is a people's revolution that is conducted under a manifesto that rejects Muhammad Ali Jinnah, that rejects two-nation theory, that rejects the formation or creation of Pakistan on the basis of communalism, only under that kind of manifesto and with that clarity of thought, अगर एक इनकलाब आता है वहां, तो पाकिस्तान जो है वो एक नया देश बन सकता है। अभी तो मैं उसको देश भी नहीं मानता, वो तो एक डाकुओं का इलाका है, जहां पे एक बड़ा डाकू फौज का चीफ बैठा है, और फिर वहां सिंध के जो लोग रूल कर रहे हैं वहां वो डाकू हैं। इसी तरह से जो ये हैं पंजाब में डाकू हैं, वो खुद कहता है इमरान खान के परवेज अलाई जो है ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग वहां रूल कर रहे हैं वो वहां के डाकू हैं। तो ये डाकुओं की फीफडम्स हैं, जिसको ऊपर एक बड़ा डाकू जो है पाकिस्तान आर्मी का चीफ वो कंट्रोल करता है। जैसे हम पुरानी इंडिया की फिल्मों में देखते थे, वो जेब काटने वाले मुंबई में जाते हैं, जब वापस आते हैं तो सारे आके उसको पैसे देते हैं कि जी ये हमने इतना लूटा है। तो वो इनकलाब तो आना नहीं है पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, एंड how this we should focus on how, because once we know or understand the mechanics of anti-Pakistan struggles going on inside that Gunda Mulk, only then we would be able to assess our position and the future of Pakistan. Firstly, let me mention Balochistan. देखिए बलूचिस्तान में इस वक्त 5वीं दफा अपराइजिंग हो रही है, और बलोच लोगों को अगर आप समझे, ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं जो सारी जिंदगी जंग लड़ते लड़ते अपने ट्राइब को बचाते बचाते इस पहाड़ी इलाके में आके रहे, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ उनके लिए आज से 200 300 400 साल पहले
मुश्किल था उस वक्त की जो आर्मीज थी उनके लिए कि इनको यहाँ पे आके चेज करें। तो ये माउंटेन्स में इन्होंने एक किस्म का यहाँ सेटल हुए बलोच लोग, और इसका नाम बलूचिस्तान पड़ा, क्योंकि ये जो अहमियत डायनेस्टी और सैफिनिड डायनेस्टी और पर्शियन डायनेस्टी जो है उनके जुल्म से बचकर यहाँ आए थे। ठीक हो गया जी। और समुंदर था, और ये बहुत सारे इनमें माहीगीर बने फिर। तो वहां पे इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपको ताज़ा तरीन में, मतलब मेरे पास जो है ना जी, वो 24/7 न्यूज आती रहती है। अभी अभी मुझे न्यूज आई आपके शो के दौरान कि अवारान में बलूचिस्तान जो है, वहां पे अवारान में बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान आर्मी के हमला करके दो पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं और एक फौजी ऑफिसर जख्मी है, और दो बलोच जो फाइटर्स थे वो भी बीच में शहीद हो गए। तो ये सिचुएशन चल रही है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के इंटीरियर में पाकिस्तान की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई पाकिस्तान का लॉ वहां अप्लाई नहीं होता, राइट। दूसरी जो है, आप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो अफगानिस्तान के साथ जो ड्यूरन लाइन है और खैबर पख्तूनख्वा है वो है। ये अभी मुझे खबर आई है, अभी अभी खबर आई है, और मेरा ख्याल है आप तक अभी ये खबर नहीं पहुंची होगी। और वो खबर जो है वो ये है कि जो तालिबान है उन्होंने, अफगान तालिबान फायर्ड एंड शॉट डाउन अ पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ऑन द ड्यूरिड लाइन इन निमरोज प्रोविंस। One senior Pakistani army general injured. Some locals say Islamic Emirate ordered Pakistan to be prepared for more possible attacks. मैंने एक हफ्ता पहले या 10 days ago ये खबर दी थी अपने रेडियो पे, रेडियो हिमालय पे, और मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, ही हैज सेड दैट वी आर गोइंग टू अटैक अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of Ramadan and we will continue with these attacks all, I mean, throughout the month. Okay, looks like Doctor. He'll be back. Let's wait for him. But welcome, Nipun, and thank you for connecting me with Dr. Amjad. जब तक हम उनकी वेट कर रहे हैं, to connect. Okay, he's back. Maybe you could take over for the next 15 minutes as well. ख्याल है कट हाँ गया। जी, you are back. पता नहीं हाँ, क्या हुआ कट था। गया। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे, ठीक है ना। आज उन्होंने ये अटैक कर दिया, हो गया ये अटैक, हेलीकॉप्टर गिरा दिया उन्होंने। अब मसला क्या है, तहरीक तालिबान क्यों हमले कर रही है पाकिस्तान? ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, और वो एक नैरेटिव जो पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ बनाता है वो बनाया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये मुतालबा है, उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस राइट अप टू अटक खाली करे, क्योंकि ये अफगानिस्तान का इलाका है। वो ये कहते हैं कि 1893 में ब्रिटिश इंडिया और किंग ऑफ अफगानिस्तान के दरमियान एक पैक्ट हुआ था, बॉर्डर पैक्ट, जो ब्रिटिश बाउंड्री कमीशन ने अफगानिस्तान के किंग के साथ किया था, और एक तय किया था कि ये इलाका जो है ये इसके उस तरफ अफगानिस्तान होगा और इस तरफ जो है ब्रिटिश इंडिया की जुरिस्डिक्शन होगी। इसीलिए पेशावर में इन्होंने फिर अपना बिठाया था, ब्रिटिश ने अपना रेजिडेंट कहते हैं मेरे ख्याल है उसको, मतलब अपना नुमाइंदा बिठाया। वो जो एग्रीमेंट 1893 में हुआ था वो 100 साल के लिए हुआ था। आफ्टर 100 years this will be under review, this will only stand up to 100 years। वो 100 years 1993 में पूरे हो गए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और इन तमाम इलाकों पे जो ब्रिटिश इंडिया के साथ हमारे एग्रीमेंट के नतीजे में
इंडिया को दिए गए थे, ये सारे इलाके वापस अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसको खाली करे। ये असल लड़ाई ये है। ऊपर आइडियोलॉजी क्या है, इस्लामिक है या मार्क्सिस्ट है या वो लिबरल डेमोक्रेटिक है, वो साइड इशू है। जो कर्ट्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं जब तक पाकिस्तान यहां से निकल नहीं जाए। पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉपुलेशन है वो पसंद नहीं करती पाकिस्तान की आर्मी को। क्यों? इन्होंने वहां बड़े जुल्म किए। उस पर अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा, उस पर डिस्कस किया जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी ने कैसे वहां पे बेगुनाह लोगों को मारा। लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शक्ल में वहां एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और एक बहुत बड़ा एंटी पाकिस्तान आर्मी सेंटिमेंट मौजूद है, जिसको इमरान खान भी जो है वो आके तो उसको दूर नहीं कर सका, उस सेंटिमेंट को, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को, कि भाई पश्तून एक प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का, वो नहीं कर सका उसको। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उधर बलूचिस्तान में ये हो रहा है, इधर खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। हम जो लोग हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के, हमने बड़ी मुश्किल से, कई सालों की मेहनत से और शबाना रोज यानी डे एंड नाइट 24 आवर हमने मेहनत करके पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, पहला नैरेटिव कि हमारा आपस में कलमे का रिश्ता है, वी आर मुस्लिम ब्रदर्स, इसको तोड़ा हमने कि हाउ कैन वी बी मुस्लिम ब्रदर्स व्हेन वन ब्रदर इज रेपिंग माय मदर एंड माय डॉटर एंड माय सिस्टर एंड माय वाइफ। हाउ कैन वी बी ब्रदर्स इफ यू आर प्लंडरिंग माय natural resources? How can we brothers if you are diverting our rivers so that you can build hydropower projects with China to supply electricity to Punjab? How can we brothers if we do not have proper hospitals? How can we be brothers if you have, तुमने गंजा कर दिया पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को। जब पार्टीशन हुआ तो हमारा जो टोटल लैंड मास है ये पीओजेके का, इसका 42% जो है वो फॉरेस्ट था, आज 14% रह गया। वो कहां गई लकड़ी, है ना? तो ये नैरेटिव तो हमने तोड़ दिया कि हमारा इनके साथ इस्लाम के नाम पर कोई बंधन नहीं है, ठीक है। फिर ये नैरेटिव तोड़ा कि ये कहते थे और पढ़ाते थे कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। तो फिर लोगों को ये बताया कि भाई इंडिया ने कब्जा नहीं किया हुआ, बल्कि 22 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान ने आजाद रियासत जम्मू कश्मीर पर अनप्रोवोक्ड हमला किया। फिर इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जी वो इसलिए पाकिस्तान आर्मी और लश्कर गए कि वहां हिंदुओं का मुसलमान कत्लेआम कर रहे थे। फिर हमने वो नैरेटिव तोड़ के ये बताया और एस्टैब्लिश किया कि भाई हिंदुओं ने नहीं कत्लेआम किया, इनकी फौजों ने जाके कत्लेआम किया। मेरे शहर में 25,000 हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया, मुजफ्फराबाद में किया, बारामूला में किया, राजौरी में किया। ये वो हकायक है जो पाकिस्तान ने हमारे नौजवानों से, लड़कियों से, लड़कों से छुपाए हुए थे, ये हमने सामने लाए। इसकी वजह से पहली चीज तो ये हुई कि हमारा पीओजेके और पीओजीबी का जो नौजवान है वो आज पाकिस्तान को पहचानता है, वो किसी कीमत पे भी पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार है। अब हमने जो उनको पॉलिसी दी है, जो लोग ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी रियासत की वहदत बहाल हो जाए, ठीक है ना, उनको मैंने पॉलिसी दी है 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। 1 स्टेप बैकवर्ड मुझे इजाजत है मैं बोलूं आगे? कैन आई कंटिन्यू? प्लीज प्लीज। अच्छा, उसमें यह है कि हमारे पास 26 अक्टूबर 1947 का जो महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो फिर आप 562 प्रिंसली स्टेट्स के उन एग्रीमेंट्स को भी चैलेंज कर रहे होंगे जो वल्लभ भाई पटेल ने मेहनत करके तो इंडिया के साथ करवा के तो एक रिपब्लिक कायम की, ठीक है ना। क्योंकि वो एक ही एग्रीमेंट है जिस पर सबने साइन किए, उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं है कि यूपी के लिए अलहदा हो और महाराष्ट्र के लिए अलहदा हो और जम्मू कश्मीर के लिए अलहदा। वो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है
जिस पे तमाम प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किए हुए, राइट। तो हम ये कहते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो हमारे पास एक वेपन है, पीओजे के और पीओजीबी के पास हमारे पास एक वेपन है जिससे हम पाकिस्तान के झूठ को ना सिर्फ काट सकते हैं बल्कि हम इसकी बुनियाद पे ये डिमांड करते हैं कि हमें वापस जो है वो भारत का हिस्सा बनाया जाए, ताकि 2 स्टेप फॉरवर्ड अब आ जाता है। ये 1 स्टेप बैकवर्ड है कि हम पीछे हो अपने इस उससे और इंडिया में शामिल हो। 2 स्टेप फॉरवर्ड ये कि उसके बाद लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को जोड़ा जाए और पीओजेके को, जो वेस्ट जम्मू था एक्चुअली, इसको जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाए और इस तरह से जो पुरानी रियासत थी उसके तमाम जो 5 हिस्से हैं वो दोबारा जुड़ जाते हैं आपस में, दोबारा से एक हो जाते हैं वो। तो ये 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड जो है ये पॉलिसी दी है। और अब पाकिस्तान में, मैं इस पे अपनी इस वक्त की बात को खत्म करूंगा, पीओजेके और पीओजीबी में हम पार्टी नहीं बना सकते। जाहिर है अगर हम पार्टी बनाएंगे जिसका मैनिफेस्टो होगा कि इलाके भारत और वी वांट टू ज्वाइन इंडिया, तो वो तो हम तो बचेंगे ही नहीं, कोई बंदा नहीं वहां बच सकता, वो तो मार देंगे या उठा के ले जाएंगे, क्रैकडाउन हो जाएगा। रॉ के एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, काफर हैं, ये वो करके तो वो तो हमने अब जो इसका तोड़ निकाला है वो, उसको मैं कह रहा हूं दिए से दिया तहरीक। दिए को आप समझ लेना ऑयल लैंप जो होता है छोटा, तो ऑयल लैंप, यू यूज 1 ऑयल लैंप टू लाइट a second oil lamp, then 2 oil lamps light to another oil lamp, then 4, like a chessboard। तो हमने इस तरह से इसको किया है कि दिया से दिया जलाने की तहरीक के किसी को कोई जरूरत नहीं भारत का झंडा लहराने की वहां, या ओपन किसी जलसे में जाने की या कुछ। आप आपस में 1 to 1 डिस्कशन करें, कन्विंस करें, एक को कन्विंस करें और करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए। जब एक क्वांटिटेटिव चेंज आ जाएगा उस बयानिए में, हमारे बयानिए को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली क्वांटिटेटिव चेंज लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज। फिर हमें कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं है, फिर हमें कोई गुरिल्ला जंग करने की जरूरत नहीं है, फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत नहीं है। फिर ये पके हुए फल की तरह खुद ही गिर के जो है आ जाएगा इंडिया की तरफ। जी, थैंक यू सर। यहाँ पे मैं ज्वाइन करना चाहूँगा। फर्स्टली आई लाइक टू से हेलो टू डॉक्टर अमजद एंड हेलो टू कर्नल सर। Hi, I'm joining after a long time with Varun. Fine, sir. I have a question for Dr. Amjad Ayub. My question is that, sir, in India, I should speak in Hindi because a lot of people are commenting that we should speak in Hindi. कि sir, people here in India don't know about Gilgit-Baltistan basically. And people don't know कि जो POK है that's basically part of Jammu and it's a Dogra speaking area, और जो गिलगित बल्तिस्तान है that's in the upper part of the Pakistan। तो मैं डॉक्टर अमजद से पूछना चाहूँगा, बस एक्सप्लेन करें हमें PO उसके बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, और हमें बताएं कि वो लोग कैसे पिस रहे हैं और वो लोग कैसे निकलना चाहते हैं, कि और इंडियंस क्या कर सकते हैं कि कारगिल एरिया से हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, जुड़ जाए। क्योंकि इसमें अब वो क्या बोलते हैं सी पैक का चाइनीज बीच में हो गया है, तो इट्स वेरी कि हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकें या वो हमारी हेल्प ले सके। और एक सर उसके बाद प्लीज सिंधु देश का जरूर बताइएगा, वी वांट टू लर्न कि व्हाट इज सिंधु देश। देखिए, पहले तो बात है कि मेरा ख्याल तो ये था कि जो मैंने इतनी गुफ्तगू की है इस पे कर्नल साहब के कमेंट्स ले लेते, तो फिर मैं आपके ये गिलगित बल्तिस्तान के जो सवालात हैं इनका जवाब दे देता। मेरी ये राय है। थोड़ा टाइम कम है डॉक्टर अमजद, आई थिंक आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू व्हाट यू आर सेइंग। गिलगित बल्तिस्तान जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, ठीक है। इसको गिलगित एजेंसी कहा जाता था। 1935 में सोवियत जो ये शिनचियांग का इलाका है आज का, ये ईस्ट तुर्कमानिस्तान का इलाका था। यहाँ पे बहुत सारी एम्पायर जो है वो लड़ रही थी, उसमें रशियंस भी थे, चाइनीज भी थे, ब्रिटिश भी थे। अब ये खतरा था कि जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान है इस पे सोवियत यूनियन कब्जा कर लेगा,
तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने महाराजा हरि सिंह से ये जो है 60 इयर्स की लीज पर गिलगित एजेंसी ले ली थी 1935 में, ठीक है। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उससे कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले, ये गिलगित एजेंसी जो है वो अकॉर्डिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो वहां पे ब्रिटिश ज्यूरिस्डिक्शन खत्म हो गई, तो वो वापस कर दिया गया महाराजा को। लेकिन वहां पे जो पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिश, वो कंटिन्यू किया उसने महाराजा के कहने पे। और यहाँ से जब ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गवर्नर बना के श्रीनगर से गिलगित भेजा गया, तो इस दौरान अब ये तकरीबन हम पहुंच गए हैं नवंबर में, ठीक है ना, अक्टूबर का एंड है। तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू पे हमला कर दिया था, कश्मीर पे हमला कर दिया था। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पे महाराजा हरि सिंह ने साइन कर लिए। इंडिया की फौजें आने लगी और तेजी के साथ पाकिस्तान की फौजें जो है वो उनको उन्होंने पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इस सिनारियो में मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन जो था, उसने पेशावर में जो पॉलिटिकल एजेंट था बेकन, उसके साथ मशवरा करके तो फौरन कू किया, घनसारा सिंह को अरेस्ट किया और कू किया 31 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को उसने वहां खुद पाकिस्तान का झंडा लगाया। पाकिस्तान को भी पता नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। अंग्रेज ने वहां गिलगित रेजिडेंसी पे झंडा उतारा जम्मू कश्मीर का, और वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगा के टेलीग्राम भेज दिया कि जी वो गिलगित बल्तिस्तान शामिल हो गया। तो इस तरह से कब्जा करवाया गया पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान पे। मकसद ये था कि इंडिया को सेंट्रल एशिया का लैंड रूट ना दिया जाए और सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है उसको हिंदुस्तान में ना आने दिया जाए। अब वो एक अलग कहानी है कि सोवियत यूनियन में स्टालिन वगैरह किस तरह से यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया और किस तरह उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, एम एन रॉय वगैरह, ये सारा वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये अब सूरत हाल है। बात यह है कि जब सी पैक का काम शुरू हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा चलो यार यहाँ तो बड़ी तरक्की होगी। उनको ये पता नहीं था कि चाइना अपने प्रोजेक्ट के साथ अपने वर्कर भी लाएगा, अपने मजदूर भी लाएगा, अपने इंजीनियर भी लाएगा, और बाकी जो उनको चाहिए वो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान की फौज देगी। तो ये लोग वैसे के वैसे, बल्कि पहले से भी ज्यादा वो भूखे नंगे हो गए। तो वो जाहिर है अब वो आजादी का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान की कराकोरम की आजाद रियासत की को कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो चूंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उनको भी यही बात समझा रहे हैं कि वी हैव टू जॉइन लद्दाख, वी हैव टू जॉइन लद्दाख। तो वो इट्स वेरी हार्ड जब आप एग्जाइल में हो, वहां पे एक कॉलोनियल कंट्री की शक्ल में आपका मुल्क गुलाम हो, वहां हर तीसरे माइल पे पुलिस और आर्मी की चौकियां हो, एजेंसियों काम कर रही हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। वहां मास मूवमेंट डेवलप नहीं की जा सकती उस तरह से। वहां नैरेटिव की मूवमेंट डेवलप की जाती है, जैसे मैंने कहा दिए से दिया जला के, और जब बहुत सारे दिए जल जाए तो फिर जो है वो एक बड़ी ही शॉर्ट टर्म, तेज, फास्ट, एक्यूरेट, फोकस्ड मास मूवमेंट होती है, जो एक किस्म का उस ऐसी होती है कि जिसको आप रिबेलियन और मास मूवमेंट में फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और वो रिबेलियन जो है वो फिर रेवोल्यूशन और वो फिर उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिंध का जहां तक ताल्लुक है, देखें सिंध जो है वहां पे जब पाकिस्तान बना तो बहुत से उत्तर प्रदेश के मुसलमान और दूसरी जगहों के मुसलमान, जो यहाँ के मुसलमान नहीं थे, जो पाकिस्तान बना, क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक तो यहाँ नहीं चली, वो तो बंगाल में चली या यूपी में, सेंट्रल प्रोविंसेस में चली। तो यूपी सीपी के बहुत सारे मुसलमान जो है वो यहाँ आ गए, तो उनको सेटल किया गया सिंध में, ठीक है ना। तो उनको जब सिंध में सेटल किया गया तो वहां पे फिर एक सिंध के सिंधी लोग और उर्दू बोलने वाले लोग, ये दो एथनिक ग्रुप्स बन गए जो हमेशा एक दूसरे के साथ एंटेगनिस्ट रहे हैं, ठीक है ना। और पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और ज्यादा इनके साथ गंद हुआ है। तो सिंध वाले अभी ये चाहते हैं, दोनों उर्दू स्पीकिंग भी और सिंधी स्पीकिंग सिंधी भी,
कि अब सिंधु देश जो है उसको अलहदा किया जाए पाकिस्तान से और उसको एक मुल्क बनाया जाए जिसका भारत के साथ करीबी दोस्ती हो, ट्रेड रिलेशंस हो, और पाकिस्तान से बेसिकली पंजाब से उनकी जान छूट जाए। जी डॉक्टर साहब, अगर आप देखें कि किस तरह से पिछले 1 डेढ़ दशक में जो सो कॉल्ड पुश मिला है पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल को, क्या समझते हैं अंदरूनी हालात कैसी रही हैं, इन्होंने पैसों का क्या किया है, अगर उस पर कुछ तवज्जो डालें तो। कौन से पैसों का? जो इनको पहले पैसे मिलते थे फ्रॉम यूएस, मिडिल ईस्ट, आ ग्रांट्स गए, मिलते थे और काफी। आपने देखा नहीं है कि जो पैसा अफगान वॉर में आया कैश की शक्ल में, डॉलरों की शक्ल में, उसमें से $9 मिलियन के तो अकाउंट्स निकल आए उस वक्त के DGISI के स्विट्जरलैंड में, उसके 3 बेटों के नाम पे। तो वो सारा पैसा साइफन ऑफ हुआ, इन्होंने स्टिंगर मिसाइल चोरी करके बेचे, इन्होंने असला जो था वो बेचा, इन्होंने कैश जो अफगान जहाज को देना था उनको थोड़ा दिया, बाकी सारा साइफन ऑफ किया। तो देखे ना, जब एक रियासत, एक स्टेट, जब वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहती, जब वो सस्टेनेबल नहीं रहती, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री से लेके कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, वो स्ट्रक्चर ही ना हो, तो फिर वो रियासत अपने आप को खाना शुरू कर देती। फिर वहां के लीडर्स जो होते हैं, आर्मी लीडर, रूलिंग क्लासेस, वो उस अपनी ही स्टेट को लूटते हैं अपनी भूख को पूरा करने के लिए। वही पाकिस्तान में हो रहा है। राइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे सर और भी है रिगार्डिंग ये पाकिस्तानी जो एक बड़ी झूठी प्राइड में जीते हैं कि वी आर इक्वल टू, मतलब कि 1 मुस्लिम सोल्जर इज इक्वल टू 10 सोल्जर्स, और हमने यहाँ पे 300 साल पता नहीं 500 साल राज किया है। बट आई जस्ट वांट टू टेल देम कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली मराठों से लिया था और लाहौर सिखों से लिया था, मुसलमानों से नहीं लिया था। तो ये बहुत बड़ी इनको गलतफहमी है, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया इस गलतफहमी में जीते क्या पैदा से सिखाने लग जाते हैं ये कि हिंदू बुरे हैं, 10 हिंदुओं के बराबर हो, और ये सब ड्रामा। क्योंकि इतना जहर भरा हुआ है, आप सोशल मीडिया में इनसे बहुत जहर भरा हुआ है आपके खिलाफ कि आप सम बंदा सोच नहीं सकता। सो ऐसा इनका क्यों है माइंडसेट सर, इतना ज़्यादा, मतलब कि जहर? देखिए ना, वो तो अंग्रेजों ने, आपको पता है 1909 में बाकायदा कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया था, जब मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स आई थी जिसमें सेपरेट जो है इलेक्टोरेट बनाया गया था। तो वो तो शुरू से अंग्रेजों ने एक इनको ये पॉलिसी रखी है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए। और हिंदुस्तान देखें पाकिस्तान क्यों बना, ठीक है ना, दो कौमी नजरिया तो एक, चलो एक उनका पॉलिटिकल एक स्लोगन था ना कि हिंदू और तरह से खाता है और मुसलमान और तरह से खाता है, हालांकि दोनों एक ही तरह से खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं, खाना फर्क खाते हैं, ठीक है ना। कोई रोटी खा, कोई गोश्त खाता है, कोई वेजिटेरियन है, लेकिन खाते तो एक ही तरीके से। फिर उन्होंने कहा जी उनका पहनना और है, हमारा पहनना और है, तो पहनते तो दोनों ही है, नंगे तो नहीं फिरता कोई। यानी ये तो नहीं है कि हिंदू नंगा फिरता है, मुसलमान जो है वो कपड़े पहन के, या वाइस वर्सा। कपड़े तो दोनों ही पहनते हैं, एक चूड़ीदार पजामा पहनता है, एक सलवार कमीज पहनता है। लेकिन उन्होंने इसको ऐसे वो किया, एंटेगनाइज किया कि हम शलवार और पजामे के ऊपर हमने मुल्क तकसीम कर दिया, वो हमें मंजूर हो गया कि हम मुल्क तकसीम कर देंगे। लेकिन हम समझ नहीं सके कि हिंदुस्तान से बदला लिया गया हमारी जद्दोजहद आजादी का, हमसे बदला लिया गया श्री चंद्र सुभाष बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की लड़ाई का, हमसे बदला लिया गया हमारे जो क्रांतिकार थे, उन्होंने जो अंग्रेजों को मजबूर किया भागने पे यहाँ से, उसका हिंदुस्तान से जाते जाते वो हमें बैक स्टैप किया, हमारे दो बाजू काटे, उधर से बंगाल काटा, इधर से ये नॉर्दर्न पार्ट काटा, और हमें जो है वो छोड़ दिया बेयारो मददगार सोच के। जैसे होता है ना, किसी को इतना मारो कि समझो अभी ये मर गया, आप चले जाओ, लेकिन उसमें जान हो, वो फिर जिंदा होकर खड़ा हो जाए।
अब दुनिया ये कहती है, पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका के कैंप में चला गया। मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान अमेरिका के कैंप में नहीं है, बल्कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो इंडिया के कैंप में आए, क्योंकि अब सफेद आदमी का गोरे का दौर खत्म हो गया है। अब या ब्राउन या येलो, अब ये दो लोगों का जमाना आ रहा है, या अब वो व्हाइट मैन रूल खत्म हो गया, वो जमाना चला गया है और कुछ अर्से में चला खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब तो है who is going to rule the world is going to be the brown race and the yellow race. This is the writing on the wall. जी, कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो सर आपकी बात कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो रूलिंग तो तो अब नहीं कहने होगी, का ब्राउन मतलब लोगों की ये है होगी। कि पाकिस्तान अपने लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली कब्जा नहीं रख सकता, जिसको हम कहते हैं कल्चरल हेगेमनी, सकाफती गलबा नहीं रख सकता, जब तक वो इस्लाम के साथ इस चीज को ना जोड़े कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क था, हमारी हुकूमत थी, हिंदू तो हमारे कमी कमीन थे, ये तो हमारा काम करते थे, ये तो हमारे नौकर थे। ये कैसे हो गया कि हमें बादशाह थे, हमें हटा के हमारा नौकर बैठ गया हमारी जगह पे, तो हमने गजवा हिंद करना है, हमने अपने नौकरों से जो है वापस लेनी है, ये नीच है, ये माइंड सेट है। हमने इसको बहुत बड़ी हद तक तोड़ दिया। देखिए जी, मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं एग्जाइल में हूँ, ठीक है। मैं डेली जब सुबह उठता हूँ तो मैं कैसे काम करता हूँ, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग। मैं कहता हूँ मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं ये सोच के उठता हूँ कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, बल्कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, लिहाजा आज मैं जितना काम कर सकता हूँ आज मैं कर जाऊं, क्योंकि कल का मुझे पता नहीं है, समझे ना। तो इसीलिए हमने एक शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस ली है कि हमने पीओजे के और पीओजीबी में जाके उस नैरेटिव को घुस के मारा है अंदर। जी, बात की टाइम आई वाज लिसनिंग, जब वरुण था चैनल पे, आपने कहा था कि स्टेबल पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है, वो अनस्टेबल होगा तो इट विल बी ओके फॉर अस। ड्यूरिंग 7 वॉर वो जितने हिंदू या बांग्लादेश से रिफ्यूजी दे गॉट इन्फ्लक्स इनटू इंडिया, तो अभी अगर ये अनस्टेबल होगा तो बीइंग ए पंजाबी, आई लिव इन पंजाब, तो क्या हमारी तरफ इन्फ्लक्स नहीं होगा इन लोगों का? अगर वहाँ पे कोई सिविल वॉर होती है या भुखमरी होती है ये आप तो पता मिक्स कर लगेगा रहे ये हैं। बॉर्डर क्रॉस करके सारे हमारे नहीं, आप ये वो रिश्तेदार देखो, अगर कोई आता है, देखो मेरी बात सुनो, कोई अगर भूखा नंगा आ जाता है उसको रोटी देना, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए भूखा रोटी मांगे तो उसको रोटी देते हैं। कोई बारिश में कोई मुसाफिर आ जाए तो उसको हम पड़ाव की जगह भी दे देते हैं। ये अच्छी बातें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये कि वो आए रोटी मांगने और हमारे किचन पे कब्जा कर ले, वो आए बारिश से बचने के बहाने और हमारे घर पे कब्जा कर ले, तो ये गलत होगा। अब बांग्लादेश की आपने मिसाल दी, बांग्लादेश का मसला बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, बांग्लादेश में एक मिलिट्री ऑपरेशन मार्च 1971 में शुरू हुआ, जिसमें लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया गया, औरतों को रेप किया गया, बलात्कार किया गया। दैट वाज द रीजन के 1 करोड़ बंगाली जो है जान बचा के भाग के बंगाल में आया। तो अगर आएंगे तो करना मैं आई हैवंट फिनिश्ड, मुश्किल हो जाएगा सर। आई हैवंट फिनिश्ड। सर डॉक्टर साहब आप बोलिए, आई थिंक निपुण की आवाज कट रही है, आप बोलिए। हाँ, तो अब मसला ये है कि पीओजे के अगर आजाद हो जाता है तो पीओजे के से तो कोई रिफ्यूजी वहां नहीं जाएगा, वो तो अपने घर में बैठे हैं। यही बात सिंध की है। सिंध वाले जो है वो भी समुद्र में छलांग लगाएंगे, वो नहीं, वो भी वही है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ है। और यहाँ पे मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई हैं। एक मैंने आपको बताया है 1 कदम पीछे 2 कदम आगे, एक मैंने आपको बताया दिया से दिया जलाना। अब पाकिस्तान की चूंकि आप बात कर रहे हैं और उसमें रिफ्यूजी का आप बीच में मसला ले आए हैं, यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो है वो ये है कि सिंधी बलोच पश्तून आपस में एक बॉडी बनाए, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी टू स्ट्राइक पाकिस्तान एट द सेम टाइम। जैसे कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, तो वो जो इंसर्जेंसी उन्होंने फक्त कोयटा में या किसी जगह पे उन्होंने हमला करना है, तो वो उसी टाइम पे
खैबर पख्तूनख्वा में, उसी टाइम पे सिंध में, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करें। और फिर हमने देखा कि ब्रास बनती है, और ब्रास जो है वो बलोच तंजीमों का, जो जंगजू मिलिटेंट तंजीमें हैं, उनका एक कोalition बनता है, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी को भी उसका मेंबर बनाया जाता है। तो चीजें बढ़ रही हैं आगे। तो इसलिए ये सोचना कि इंडिया पे बोझ पड़ेगा, इंडिया पे बोझ अगर थोड़ा, अव्वल तो पड़ेगा नहीं, और अगर थोड़ा सा बोझ पड़ता है तो क्या वो बोझ हमें बेहतर है, या ये जो कंटिन्यूस टेररिज्म की इन्फिल्ट्रेशन और कंटिन्यूस जो हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे तरक्की के व्हील में ये स्पैनर फेंकते हैं, वो बेहतर है, या थोड़े देर के लिए तकलीफ लेके इसको डिसमेंटल किया जाए, ये बेहतर है? राइट सर। सर इसके बाद में मेरा एक क्वेश्चन और है सर, कि जैसे अभी श्रीलंका में आपने क्राइसिस देखे हैं सर, ये कर्नल सर से भी है क्वेश्चन, कि वी आर सीइंग क्राइसिस इन श्रीलंका, कि दे हैव इवन पेट्रोल और डीजल, बच्चे पढ़ाई पेपर नहीं दे पा रहे हैं, दे डोंट इवन हैव पेन्स टू गिव एग्जाम्स। तो अभी पाकिस्तान पे भी सेम इकोनॉमिक क्राइसिस आने का चांस है। तो हाउ डू यू सी कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ, या दे विल सर्वाइव? See, they are living on doles for long, so they will survive for a little bit more time. But there will be a time when the Chinese will ask for the money back. When what Dr. Saab has spoken about, when you see all these, 3 or 4 places where they will have trouble going ahead, you imagine how will the Chinese investments and the infrastructure development through Pakistan will also survive. They will not survive. So there will be a threat to the Chinese assets created in Pakistan, and the threat will come internally from Pakistan, because the other states will like to associate themselves from Pakistan, and that's a challenge. When that happens, and when they can't see their assets grow, or they can't see the safety of their assets, there will be a point in time when the Chinese will ask for their money back, right? And that is where the actual debt laden country like Pakistan will succumb. So that is the structure when you compare with Sri Lanka. But the difference being, for a country like Sri Lanka, there is a country like India. And with a country like India interested in Sri Lanka, there are many other countries who are friends of India to support Sri Lanka in whatever they can do. Pakistan that way has very little friends. So it had a all-weather, not a friend, but an ally. And it has made a mistake of the Chinese being its friend. And they have seen how it has come to the Chinese territory at the cost of their own lives and their own interest. You have had a lot of unrest in the last about 3 years, 3.5 years, along this CPEC route, and there have been various skirmishes between Pakistani population and the Chinese army. And I think it's a good sign for us to see, because the more they antagonize the Chinese and vice versa, you will find the Chinese being a little more assertive and demanding. So I think that is the way. But Chinese pockets are also not running so deep that they will support a country like Pakistan forever. In parts, maybe, but not throughout. But comparing both, I think Sri Lanka has made a little bit mistake in choosing the economic partners earlier, and it is understood the folly. And I think they will come around, and they will come around a little better than what we expect Pakistan to come around later. जी All right. Great. Thank you, Nipun, for managing it for a few minutes. But मैं सारा सुन रहा था, and what a great conversation. What doctor has मैं नहीं आ सकता. एक second. What Dr. Amjad has brought to this particular discussion today is a very raw, very uncut kind of perspective. Not that Colonel ever minces his words, but आज Dr. Amjad को सुन के, I'm really glad, and I'm 100% sure now that this is the first of many sessions that I'm going to have with Dr. Amjad. I'm really looking forward to many more. But just to wrap it up, if we have to summarize and look at how things have happened with Pakistan, with the US alliance, with other alliances, other countries, looking at it very closely. मैं एक पर्सपेक्टिव चाहता हूं आपका. कल जो होने वाला है, अगर पाकिस्तान में फिर से नवाज शरीफ कहां से आ गया, कर्नल का फेवरेट इमरान खान वापस आ जाता है, हाउ डू यू सी
impacting whatever he was doing, and कैसे उसकी कोई country की कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट या किसी भी एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे, या you guys think it will not happen? Do you think Imran Khan is gone now? Let's start with you, Dr. Amjad. देखिए मेरी यार सुने, आप आपका सवाल सुन के मुझे टाइटैनिक फिल्म के आखिरी सीन याद आ गया। अगर Okay. जब टाइटैनिक जो है ना, वो ऐसे टाइटैनिक का जो जहाज होता है वो ऐसे पानी में जाता है तो लोग गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, देखा है आपने वो? तो हम देख रहे थे, तो मेरा बेटा मुझे कहता है, पापा वो वाला पहले गिरेगा या ये वाला पहले गिरेगा? मैंने कहा बेटा देखो, वो गिरे या ये गिरे, गिरेंगे तो सब ही। तो इट डजेंट मैटर कौन पहले गिरता है कौन बाद में गिरता है। फिर पूछता है, पापा ये जो वायलिन बजा रहे थे वो भी गए, गिर गए बीच में? मैंने कहा हाँ बेटा वो भी गिर गए। कहता है कैप्टन? मैंने कहा बेटा कैप्टन ने खुदकुशी कर ली। तो आप टाइटैनिक देख लें और आपके सवाल का जवाब उसमें मौजूद है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया जवाब. I think I don't know, Colonel, if you want to add something, but I think this is a very great answer to summarize everything. Absolutely. So one has seen Titanic 18 times, and I remember when it was released. So I was doing a course, a military course, and I was the one who had big deck systems and a television and a video, cassette player that time. And I saw it once. But whenever I used to go to sleep in the afternoon, somebody used to say, "Can we see Titanic?" So that cassette remained with me, and I presumed the cost of the cassette was lesser than the rental that time, so I kept the cassette with me thereafter. It's lying in some box, but very aptly put out. But unlike Titanic, which was on a mission to define, the sector of seafarer, Pakistan is in a mission of doomsday today. But I'm so happy to have heard the doctor, because he brings to the table not only the angst of humanity which is suffering at the hands of the Pakistanis there, but he also brings in a lot of hope in a very structured manner, whether he talks about one step back, two step forward, or he talks about diya to diya kind of a connect. I think these are the positive notions which the next generation, because he has lived his generation actually, the next generation which they are trying to make them stand and know facts and enhance their awareness, is actually the generation which will carry these two strategies forward. And I think with a conjoining of efforts of the factions which he spoke about, which are not with Pakistan, which were not supposed to be part of Pakistan, and which want to be away from Pakistan, I think this conjoining of the forces at an opportune time and a moment as a revolution is something which you can hope for, because that is something which is going to come from within, and it is something which cannot be stopped today. I think it's in the making, and more these fry pans they keep making in the Pakistani legislation. It's better for these factions to have the time to think through and devote more and more time to energize this revolution actually. So it's better that they are unstable politically and they have that flip flop going there, while the conjoining of forces takes effect in a more surer way to strike tomorrow. So I'm very happy to have heard him today, because he brings a lot of positivity to the future. Because lot many people, by the time they come to his age, they have stories and they have the angst, but they don't have the will in them to be an exponent to carry forward that zeal to survive another day, to fight another day, and to achieve the freedom which probably their forefathers wanted to have that time, but they could never have because of the way the Pakistani establishment was so cruel. But at least they have reinforced that belief that humanity can be pushed down, but actually humanity can never die. So merely then existing, I think people like him are who are living to see another day of hope and some another day where they can truly call themselves independent. So I think that's a very strong message which is coming from the doctor himself. Thank you. Absolutely. And before we wrap it up, एक बार मैं फिर सबको I think beginning में मैं कहना भूल गया, but डॉक्टर अयूब का एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है. डॉक्टर, आप अगर सर्च करेंगे Amjad Ayub Mirza, you'll be able to see his YouTube channel.
बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हमें सुनने भी चाहिए, हमें देखने भी चाहिए, वो सब वहां पर हैं. सो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल. एंड आज ये जो एक कनेक्शन बना है, थैंक्स टू निपुन फॉर दिस कनेक्शन, जो डॉक्टर अमजद के साथ हमारा बन गया है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वी विल हैव मोर ऑफ सच कैंडिड कन्वर्सेशंस. कल का जब भी होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ वीडियो. आई एम श्योर डॉक्टर अमजद विल मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड we'll share it here as well. बट बहुत ही जल्दी दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक, नए इशू के साथ. जाते जाते ऑब्वियसली आपने शुरुआत में एक बात की थी डॉक्टर अमजद, माहिरा ताहिर के बारे में. I am definitely one of those ignorant ones जिसको नहीं पता ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में. आपने आज हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए भी थैंक्स. हम ढूंढेंगे इसके बारे में, सर्च करेंगे एंड वी विल आल्सो नहीं, टॉक आप अबाउट. सॉरी टू हाँ जी. इंटरप्ट, आप मायरा ताहिर के साथ एक प्रोग्राम करें. मैं आपको उनका देता हूं कांटेक्ट डिटेल्स. आप उनका प्रोग्राम, उसको बुलाएं अपने शो पे, उसको बोलें बताओ तुम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की बहन हो, हमारी बहू के साथ बलात्कार हुआ है भाई. आप यहाँ पे बिठाओ किसी महिला को भी अपने साथ और आप उसका इंटरव्यू करो. हम अपनी बहुओं के बलात्कार करने वाले लोग नहीं है. बिल्कुल. तो मेरा कमिटमेंट है आपको, अमजद जी, आप कनेक्ट करवाएं. एंड हमारे पास हमारे साथ और भी हमारी लाइक मदर्स एंड सिस्टर्स वी हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनको भी हम लेके आएंगे एंड वी विल डू दिस कन्वर्सेशन इन अ मोर सेंसिबल वे. तो डेफिनेटली हम करेंगे. हमारी तरफ से पूरा कमिटमेंट है, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है अमजद जी. एंड आई एम श्योर even this resonates with Colonel Rohit as well, because he also stands for these topics, these issues. So एक बार फिर जाने से पहले मैं चाहूंगा, पहले मैं कर्नल के पास जाऊंगा. कर्नल, एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी रैप दिस अप? I've already said, so I think let Dr. Amjad go ahead, please. All right. जाते जाते डॉक्टर अमजद, एनी मैसेज यू वांट टू लीव विद? मैसेज यही है कि देखें, हम रोजाना बहुत सारे काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आपको मौका मिले, दिन में एक दफा, चाहे आप किसी दुकान पे जाएं, टैक्सी में, रिक्शा में, या सब्जी लेने जाएं, या ऑफिस में जाते हैं उस वक्त, या वॉचमैन के साथ या लिफ्टमैन के साथ, पीओजेके और पीओजीबी के बारे में थोड़ा सा जिक्र जरूर करते हैं. मायरा ताहिर का जिक्र कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि तुम जानते हो, इतना ही कह दें कि क्या तुम्हें मालूम है कि पीओजेके और पीओजीबी जो है, गिलगित बल्तिस्तान और ये इलाके जो है, ये असल में इंडिया के हिस्से हैं. ये फूड फॉर थॉट दें ताकि वहां लोगों में एक उजागरी पैदा हो. बस इतना ही कहूंगा मैं. बहुत बढ़िया, बिल्कुल डॉक्टर मिर्जा. एंड रियली थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू. आई नो आपके कुछ खुद के सेशंस थे जिस वजह से हमने आज ही किया, बट आई एम रियली obliged एंड आई एम रियली humbled कि आपके साथ आज ये जो कनेक्शन बना है, आई थिंक इट्स अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन नाउ. और बहुत जल्दी हम दोबारा we'll be talking more about a lot of other issues. So once again, thanks Nipun for this wonderful connection. I am really really grateful to you कि आपने सोचा और आपने डॉक्टर अमजद को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए. एंड डॉक्टर प्लीज. मैं डॉक्टर अमजद को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. आई एम हिज फॉलोअर, नॉट फैन बट फॉलोअर. सो आई सपोर्ट हिम लाइक एनीथिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो थैंक यू अगेन. और डॉक्टर, सॉरी, बोलो निपुन. मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर अमजद कोई मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, कुछ बताइएगा मेरे को प्लीज. बस मैंने बता दिए हैं उनको. तायरा को लाएं अपने शो में, और जब Surely, किसी sir, से surely. मिलें तो उनसे पीओजेके का पूछें. डेली बेसिस पे एक शख्स को पूछें. तो बहुत आप Surely, sir. एक महीने में 30 लोगों को आप पूछ चुके होंगे, और आप 3 यहाँ बैठे हैं, तो एक महीने में 90 लोगों को तो आप पूछ चुके होंगे. बाकी एल्गोरिदम आप खुद कर लें. बहुत बढ़िया. And one thing which I definitely have to tell before I end this, Dr. Amjad, I personally did not know, what kind of a person you were, what kind of a, thought process you had. But I have to tell you, and on a live right now, I'm really glad कि we connected. I'm really happy कि, ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ तो रिस्क में है. आपने जैसे कहा, आपने मुझे पहाड़ भी दिखाए थे थोड़े से आपने शुरुआत में, कि किस तरह की लाइफ में आप जी रहे हैं, बट फिर भी you are not going to sit quiet.
आप हर चीज के लिए लड़ रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू यू, मोर पावर टू यू। और हम सबसे जो बन पड़ेगा, वी आर ऑलवेज गोना बी देयर। एक definitely keep on doing what you're doing. More power to you. So thank you so much to you. Thank you so much, Colonel, once again, and thank you, Nipun. Thank you. Jai Uh, Hind. Jai Hind, Jai Jai Bharat. See Hind. you soon. See you soon. So, Jai Hind, Jai Bharat, Hari Om. Jai Bharat. Bye bye.